Is this visible for everyone? Yes, sir. Okay. So solve this question. NEET 2025. Remember, I'm not just looking for the answer. More than that, how you are doing it. Even if you are not able to complete it, that's absolutely fine. But how you are doing stepwise. Sir, I'm not able to do physics questions, thermodynamics ones. I Okay. tried. Not worry, I'll explain. Arpit. सर ये आंसर याद है मुझे इसका हाँ? इसका याद है मुझे ऑप्शन डी है डी है ना ऑप्शन हाँ, ऑप्शन तो डी ही है. मैंने किया था नीट में किया था ये इसलिए याद है ओके. कैसे? हाउ? करना पड़ेगा चलो ठीक है हाँ, फर्स्ट लो सोल्व करो इसको. सोल्व करो हाँ एक बार इसको, तब तक मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन. ठीक है. एक मिनट हाँ. So guys, we have two gases, gas A and gas B, have same pressure. This is the keyword, same pressure in the separate cylinder moving with movable piston of radius A and radius B. So same pressure, two gas in different cylinder and have different radius, right? On supplying equal amount of heat, this is second statement, equal amount of heat to both the system reversibly and pressure is constant. Piston A is displaced by 16 centimeter and B by 9 centimeter. If their change in internal energy is same, you have to calculate radius. So let me tell you what is given. You have two cylinder A and cylinder B. Both have same pressure, so pressure of A will be equal to pressure to B. Radius of this cylinder is RA and this cylinder is RB. Okay. We are supplying same amount of heat. So it means we said when PA pressure of A is equal to B, so we are supplying same amount of heat. Supply to A is equal to heat supply to B. Okay. And when you supply heat, piston will move. So A piston is moving by 16 centimeter and B piston is moving with 9 centimeter. Okay. Then internal energy is also same. Change in internal energy of A is equal to change in internal energy of B. Makes sense? So everything is given to you. But based on the question, what you can feel, okay, pressure is same. We are talking about radius. We are talking about their displacement, length. Can you imagine? In this case, we are talking about volume because volume involve both area as well as length. Correct? Area of the piston will be pi r square and length is this. समझ में आया सबको? All of you understood? Yes, We don't Yes, know. sir. We don't know answer. That is absolutely fine. But at least we know what is given, and because it involves radius and length, it means definitely we are going to utilize volume. Correct? We are going to utilize volume. And when you said heat is same, internal energy is same, can you say in this situation first law of thermodynamic
Enthalpy will be equal to change in internal energy and P delta V. Q is same, U is same. Can we say कि P1 delta V1 will be equal to P2 delta V2 because all other value are 0. Understood? Why? Same internal energy. It's not changing. If UA is equal to UB, it means there is no difference. Difference is 0. 10 minus 10, 0. Correct? Same for the heat. It means work done for both the system will be same. In this question, pressure is also same. So pressure will be cancelled out if it is same. Can you say volume of the first will be equal to change in volume of second? Now tell me, was this question really difficult? क्या ये मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं. हमें एक बात का आइडिया लगाना था. वी हैव टू गेट वन आइडिया कि एरिया एंड लेंथ दिया तो वॉल्यूम पिक्चर में आएगा. इफ एरिया एंड लेंथ इज गिवन, volume will come into the picture. Heat is change in heat is 0, change in internal energy is 0. So work done is same. Pressure is also same. So change in volume will be same. Now from here you can calculate area of first and length of first will be equal to area of second and length of second. What is the first area? Pi r1 square, length 16 centimeter. Second, pi r2 square, length 9 centimeter. Pi cancel. You can calculate r1 by r2 का whole square is equal to 9 by 16. So r1 by r2 ratio will be 3 by 4. पूछो अगर किसी को डाउट है तो. Ask if you feel you have doubt. Should I explain this again? Anvita, Yes, sir. should I explain this again or you understood? I understood. Chandana, Understood. Arpit, Yes, sir. प्रतिज्ञा, नींद में हो प्रतिज्ञा अभी भी? नहीं सर समझ में आया. जाग जाओ. बरिंदर. Yes sir. So see, though we know we have to solve the part, but if you get the idea कि I have to apply volume concept, then it will take less than 30 seconds. Correct? Because first law of thermodynamics, everything is same. So P delta V, pressure is also same, so volume are same. So you have to directly take radius ratio, and that's all. Then L2 by L1. Correct? Done. Yes or no? So 2025 में क्वेश्चन ही लेंथी थे, उतने मुश्किल नहीं थे. There were lengthy question but not really difficult. मतलब देखो, no doubt there were 5-10 difficult question for sure. Nobody can deny that fact. But not all. Now you solve this question. Oxygen cylinder volume this. After some gases withdrawn from the cylinder, Gauss pressure drop from this mass of the withdrawn equal to. Okay, we'll do from the kinetic theory of gas.
पार्टीशन ऑफ गैस, इक्विलिब्रियम प्रेशर, ये भी thermodynamic. हाँ, this one. All of you tell me your answers. This is more from the chemistry rather than physics. The volume and work done. Volume and work done. Okay. अर्पित नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या? सर अपना जूम आईडी दे सकते हैं, मतलब मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी देखना पड़ेगा, कैसे पता इधर चलेगा? चार्ज नहीं है मेरा फोन में। डिस्प्ले अच्छा, तो फिर उसमें कैसे सॉल्व होगा? मीटिंग आईडी कैसे निकलेगी? क्या पता है, एक मिनट, मैं पहली बार किया हूँ जूम में ऐसे। अच्छा, तो अभी क्या चार्ज कम है, क्या इश्यू है? नहीं, नेटवर्क इशू है, मतलब मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूंगा, इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो मुझे वहां से टेक्स्ट कर दो, मैं उसमें शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है। किधर से? नहीं, इधर जिस व्हाट्सएप नहीं है ना। अच्छा, इंस्टा में कर देना, इंस्टा में कर दीजिए। ठीक है, मैं इंस्टा में भेज देना, मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। देखा। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना दोनों का? So can you show me कौन सा वाला? प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन, दिस वन। हाँ ये या दिस वन वाज फाइन। अर्पित, yeah, so tell me your answer for this question. Equilibrium state of the thermodynamic system is described by pressure, total heat, temperature, volume, and work done. So पहले तीन ना? First three. Okay. So A, B, C, C. प्रतिज्ञा, तुमने बताया था कोई आंसर? You told one answer. The volume and work done. Volume नहीं नहीं and नहीं work नहीं done. D, E, नहीं and नहीं 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 work done नहीं होगा। work done. नहीं होगा. Okay. I'm telling you this is from more like from chemistry टेम्परेचर part rather than physics. टेम्परेचर होगा, वर्क डन नहीं होगा। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। Answer temperature, volume, C, D. So answer B or D. सर प्रेशर भी होगा। So A, C, D, D. हाँ ऑप्शन डी। चंदना, अर्पित, आवाज आ रही है मेरी?
अर्पित आवाज आ रही है मेरी? हाँ चंदना, व्हाट इज योर आंसर? So can you show the option? या श्योर। बरिंदर, आंसर रेडी रखना अपना, रेडी रखना अपना आंसर। बरिंदर, चंदना, you tell me your answer. Sir, A, C, D. Option D. Option D. Barinder, Sir, option Arpit, C. option C. Arpit, Arpit, आवाज आ रही है मेरी? Okay. So, you know equilibrium state. Equilibrium state means forward reaction become equal to the backward reaction, right? So, equilibrium is the cyclic condition, or you can also call it as a reversible reaction. Cyclic reversible reaction. What happen in the reversible reaction? You know two type of quantity. One is the state function and second is path function. So Anvita, what is state function and path function? So like state function it doesn't depend on the path. Like, Okay. yeah, the final state it depends, and uh, Hmm. in path function obviously it depends on the path and not only the like the final like state or whatever. Okay. अर्पित आवाज आ रही है? जी सर जी, अभी हो गया अभी। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? कौन सा, मतलब क्वेश्चन नहीं देखा। Sorry. Equilibrium state of the thermodynamic system is described by. जी जी जी, क्वेश्चन देखा ये सर। जो विजिबल है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, अभी देखना। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑप्शन प्रतिज्ञा। डी। डी। हाँ, बी, हाँ, डी, डी 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 और बी? डी डी डी। डी। Okay. Pratigya, what are the example of state function and path function? स्टेट फंक्शन की Hmm. Barinder, what are the example of path function? वर्क एंड हीट। Path function is work and heat. You have to just remember these two examples. कि path function जो डिपेंड नहीं करते, सॉरी, जो डिपेंड करते हैं कि जर्नी क्या है. So path function are the kind of property that depend what is the journey. Example, if you rub your hand, it will generate heat. If you bring your hand back, again it will generate heat. So it's not like if you are going from A point reach to B, तो A से B में जाओगे, if you go A to B, तो मान लो तुमने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया 10 मीटर, B से A आओगे, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? What will be the final displacement if you come from B to A again? Arpit, जी सर। if you go from A to B and then come back to A, what will be the final displacement? जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो, होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो स्टेट फंक्शन एकदम उसके जैसे हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी की तरह है, लाइक डिस्प्लेसमेंट. एंड पाथ फंक्शन इज लाइक डिस्टेंस.
जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर द टू एग्जांपल। इन स्टेट फंक्शन देयर विल बी इक्विलिब्रियम or cyclic process or reversible reaction where state function will be zero. Okay, so state function will be zero in case of equilibrium reaction or cyclic process or reversible reaction, because ultimately final position and initial position are same like displacement. Correct. So work done cannot be there because it is path function. Total heat cannot be there because again it is path function. So what are the state function? Pressure, temperature, volume. These are going to decide your state function, right? Like internal energy, like Gibbs free energy, like enthalpy, right? Any doubt? So equilibrium state are the state of where initial and final position becomes same in case of cyclic process. So that's why value will be zero in cyclic process. So Chandana, in a cyclic process, what will be the change in internal energy? Zero, In a sir. cycle, in a cyclic process, what will be the change in internal energy? Zero. That is why it is a state function. Arpit, what will be the change of Gibbs free energy in cyclic process? 0. Zero. That's why it is a state function. Pratigya, what is the change in the enthalpy in case of cyclic process? 0. W. No, enthalpy will be zero, but heat will not be zero. है ना? W. So नहीं. in according to the first law of thermodynamics, in physics, it is delta Q is equal to delta U plus P delta V. But remember, in case of chemistry, heat and enthalpy are two different things, right? Heat is path function, but enthalpy is state function. Correct, Arpit? सर साइक्लिक प्रोसेस में क्यू क्या होगा? डेल्टा Q जीरो होगा नहीं, क्यू क्यू क्योंकि सिर्फ क्यू सिर्फ Q साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होगा। क्या होगा मतलब? अब वो डिपेंड करेगा, जैसे साइक्लिक प्रोसेस है तो you know delta U is equal to Q plus W. So ये zero. So Q will be equal to minus work done. W नहीं minus W. सर ने बताया था क्यू इक्वल टू डब्ल्यू होगा हमारे सर मतलब. नहीं नहीं नहीं, केमिस्ट्री में, in chemistry, first law of thermodynamics is internal energy is equal to Q plus W, right? हाँ Right. हाँ So so if delta U is zero, तो W दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा. हाँ, हाँ. मैंने ही गलत First, लग. हाँ, first law of thermodynamics in chemistry. ये क्या है? हाँ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. अब डेल्टा U जीरो हो जाएगा तो W अदर साइड नहीं चल जाएगा. हाँ हाँ हाँ. करेक्ट. फिजिक्स में ये डिफरेंट है. ऐसा क्यों है? व्हाई वी हैव डिफरेंस इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, अर्पित? प्रतिज्ञा, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइक व्हेन इट कम टू द फॉर्मूला? सब्जेक्ट अलग है. दैट मेक्स सेंस मैन. ये बात भी सही है. पता नहीं.
कोई क्यों बनाया है इसे? कोई तो बनाया है। वरिंदर, सर उसमें इंटरनल एनर्जी प्रेशर होता है और केमिस्ट्री वेरी में गुड, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। वेरी गुड. But Varinder, that's what I told in the class of thermodynamics. Remember this in physics. When you talk about work done is equal to P delta V, then we are talking about pressure that is internal pressure. That's why you will see sign is also different. जैसे अगर केमिस्ट्री में तुम देखोगे तो एक्सपेंशन अगर होगा, in case of expansion, work done will be negative. But in physics, if there is a expansion, work done is positive. How is that possible? Answer is, it is because when you have internal pressure, तो internal pressure की वजह से expansion हो रहा है, तो pressure तुम्हारा बढ़ रहा है, तो work done positive. Because there is internal pressure increasing, expansion is happening. That's why work done is also increasing. It is positive. But in chemistry, when expansion is happening, it means external pressure is reducing. Correct? P external will reduce. That's why it is negative. Makes sense or not? Chandana, Yes. in doubt? Anvita, any doubt? No, sir. Arpit, जी समझ गया. ये पता था पहले बात, ठीक है? In physics, we use internal pressure, and in chemistry, we use external pressure. That's why sign are different. In physics, you take plus P, but in chemistry, you take minus P external, right? बस इसी का difference. That is the major difference. And this is from kinetic theory of gas. This kind of question is important, yes. So when will we do kinetic theory? After that, next chapter will be kinetic theory. Okay. So forget about options. You tell me based on the question, what should be your answer? Question के 0. बेस पे तुम्हारा आंसर जीरो. हाँ हाँ 0 0. जीरो. Anvita, So what did you ask? what will be the value of work done in this case? Work done by the gas in the path BC. This path BC. Fast, fast. Chandana, Pratigya, all three of you answer this question fast. BC, zero. Pratigya and Anvita. It will be zero. Why? Because here volume is same from B to C. At B point, volume was 400 centimeter cube. At C point, volume was 400 centimeter cube. Same volume. And you know, work done is equal to P delta V. Yes. Correct? Delta V is zero. That's why work done is also zero. So answer will be zero. Any doubt? Anvita and Pratigya. Nice, sir. Okay. So, example, uh, from C to D, what will happen, Arpit? जी जी जी. C to D, what will happen? Is work done positive or negative? And इधर how you gonna calculate? वर्क डन नेगेटिव because volume is decreasing. That's why.
Yes, volume is decreasing, so delta V is negative. So work done will be negative. How to calculate? मतलब कैलकुलेट कैसे करें इसके केस में वर्क डन? क्वेश्चन देखे कुछ So method to solve such kind of question is the area under the structure. मैंने तो पी डेल्टा भी से कर दी, हो भी सकता है ना ऐसे? हाँ, हाँ मैं ऐसे ऐसे किया था। तो इसमें if you have to calculate what will be the value of work done, so total amount this, that's all. कैसे करें? So work done, you know, P delta V, and work done is also equal to area under PV. What is the area of this? Length into breadth. What is length value? 400 minus 100, 300 centimeter cube, delta V. What is pressure difference? 300 to 0. So 300 kilopascal. You will get answer. Done. But in negative. From C to D, it will be negative. Any doubt, guys? Anybody have question from this? No, sir. No, sir. Barinder, Pratigya. No, sir. Chandana, will it be same if you calculate work done from A to B? Chandana, will it be same if you calculate work done from A to B? Tell me, No, A to B, will it be positive or negative? positive. Positive because volume is increasing. Volume is Work done- increasing. Because delta V is positive, so work done will be positive. Do you think value will be same as CD? So in positive. Yeah, it will be positive, but value, amount, magnitude. Yes, sir. Answer is no. Why? Because from C to D, area under that was the blue color part, right? Big blue color part, this. But from A to B, area under this time, we gonna use only this part, correct? Less area. Yes, sir. So less work done will be there. How much work done? Let's see. Work done is equal to area under PV. Area, what is the length? 400 minus 100, same, 300 centimeter cube. What is the width? Only 100 this time. Makes sense? I'm not going to tell you the answer. Calculation you have to do. I'm going to tell you, yeah, there is a difference when you calculate work done from C to D and A to B. अर्थ आया? Yes, sir. तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं. This is how you have to solve question, not just what is the answer, but we have to take different situation out of the question. हमें अलग सिचुएशन खुद से बनानी पड़ेगी, तभी हम नई चीजें सीख पाएंगे. क्योंकि याद रखना कि यू आर नेवर गोइंग टू गेट सेम क्वेश्चन अगेन. ये दोबारा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा सेम क्वेश्चन. एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर टुडे. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Temperature of the gas given cycle. This one. Solve it without the option, and all of you have to tell me the your answer. सबको मुझे अपना आंसर बताना है कि सर मेरा ये आया. During isobaric process.
0, sir. 0. Do it again, though you have 0 option. Sir, Okay, 600. your answer is 0. हाँ प्रतिज्ञा 600. 600. सर हो गया क्या आंसर आया? 6 into 10 to the power 5 joule. कितना? 6 6 into 10 to the power 5 joule. 10 raised to power 5 joule. अन्विता एंड बरिंदर कैलकुलेट करो दोबारा से अर्पित कैलकुलेशन में। यहाँ पे मीट्रिक क्यूब है और यहाँ ऑप्शन न्यूटन किसमें मीटर। जूल ऑप्शन में, किसमें जूल 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 में तो क्रॉस चेक इट। पर अन्विता एंड बरिंदर क्या आंसर आया? अन्विता बरिंदर 1 मिनट sir. सर यही तो आ रहा है ना 6 into 10 to the दोबारा power से चेक करो, दोबारा से चेक। देखो फर्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस है between A to B. You have isobaric process from A to B, and you know how to calculate work done here. Area under the graph, correct? This area will give you work done. Make sense? Work done is equal to area under PV graph. And how to calculate area? This breadth 3 minus 1 2, and this length 3 minus 0, so 3. So what will be the answer? 3 into 10 raised to power 2 multiply by what is the volume? 3 minus 1 2. तो आंसर कितना आया? अर्पित तुमने निकाला तो सही था, मुझे लगता है कहीं पे 10 raised to power 5 ले लिया गलती से। शायद Any doubt guys? No sir. No, sir. Exactly like previous question. मैंने 2 You को 5 just should know what is iso. अच्छा, पावर में मिस्टेक की है। हाँ तो that is the thing. एरिया निकालना है exactly like the previous question. यहाँ we did same thing here कि when we were calculating from C to D, अभी समझ में आया? Got my point? कि C last time they asked only B to C, easiest one they asked B to C. It was 0, but I intentionally did this C to D, correct? Minus work done. Same thing they asked here, A to B, same way exactly. Method will be same, formula will be same. Cross multiply 3 minus 2 6, 100. So you have to solve more number of questions. Today's task for you to finish, I'll give less number of questions. 30 questions from the thermodynamic, any PYQ, any question your choice. Try to make it tough. And then in next class, we'll discuss your problems, your doubts. Everybody's doubt will be taken. मान लो 5 लोग हैं, तो at least 2 2 3 question will be taken from every person. सर बट मैं आज सिर्फ नहीं कर पाऊंगी, मुझे 2 दिन या मतलब एटलीस्ट आज और कल चाहिए सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है वैसे भी। अच्छा तो फिर तो उसके लिए एक बार रिवाइज करो थ्योरी पार्ट को, तो समझ में आएगा। और अगर थ्योरी पार्ट में डाउट आ रहा है तो मुझे बताना, तो एक क्विक रिवीजन करेंगे 15 मिनट का, फिर क्वेश्चन लगाएंगे मैं बेसिक। अभी आज आपको केमिस्ट्री के सॉल्व करके भेज देती हूँ क्वेश्चन और ठीक है, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन भेज देना, बट स्टार्ट करो थर्मोडायनामिक फिजिक्स। हाँ हाँ पक्का।
सर ठीक है, कम क्वेश्चन हो गए बट स्टार्ट करो। हाँ अर्पित। एक क्वेश्चन डाउट था, बता देंगे थोड़ा? हाँ बिल्कुल। ये कैसे इसी कैसे? चैप्टर से था या किसी और से? हाँ नहीं, इसी चैप्टर से, ये थर्मोडायनेमिक्स से आज ही हाँ कर रहा हूँ। हाँ भेजो। एक सेकंड लिख कर अच्छे से भेजता हूँ, मतलब नोट्स का क्वेश्चन है ना। हाँ हाँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर लिया। ओके। तो कोई और क्वेश्चन देख लें हम यहाँ पे। लेट्स सी अदर क्वेश्चन। We did this question in class. There are 5 people. I'll ask one question one by one. Anvita, which one is adiabatic? Which one is the isobaric process? Let's make it simple for you. So which one? Out of Isobaric. is isobar. What is the meaning of isobaric? So constant pressure. Constant pressure is same. So out of 1, 2, 3, 4, which one is isobaric? Fourth one. Fourth one. Any doubt? Anybody have doubt in this? No. So this is isobaric. Chandana, uh, which one is isochoric? What is the meaning of isochoric? Sir, volume remains constant. Volume remains constant. So where volume is One. constant? One. 1. See your volume value is constant. Arpit, out of 2 and 3, which one is adiabatic and why? एडियाबेटिक मोर मतलब फ्लैट है ना, मोर फ्लैट है आइसोथर्मल से, इसीलिए 2 होगा। हाँ 2 तो होगा बट मोर फ्लैट नहीं, मोर स्लोपी होता है। हाँ मतलब गामा एक आ जाता है ना, कांस्टेंट ऐड हो जाता है ना, इसीलिए। एग्जैक्टली एडियाबैटिक की वैल्यू जो होती है वो होती है गामा कंपेयर टू द आइसोथर्मल। गामा टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और हम भेज क्योंकि देंगे। गामा ओके so because gamma value is more than 1, so that's why you will see adiabatic value is more. So answer will be 2 is adiabatic. Okay, so you will always have confusion between 2 and 3. Which one is isothermal? Which one is adiabatic? How to identify? During expansion, adiabatic will be present lower than isothermal. Shape is exactly same. Both are parabola, right? 2 and 3 both are parabola. But how to identify? If it is lower during expansion, adiabatic. That's all. As simple as that. Any doubt on Chandana, Pratigya, No, sir. Arpit? No, sir. हाँ तो अर्पित भेज दिया ना? हाँ हाँ भेज दे, देखता हूँ। तो वर्क डन क्लॉकवाइज में होता है पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज में होता है नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव होगा खत्म। वर्क डन इन क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, वर्क डन इज एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ये हमने क्लास में ही किया। वर्क डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन is positive and work done in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव, दैट्स ऑल। साइक्लिक प्रोसेस में होता है ना सिर्फ। नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब हाफ है, बट है अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज, नहीं दो यू मतलब हैव ओनली हाफ साइड। हाँ ऐसे तो नहीं होता है, मतलब अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है तो एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव एंड सॉरी नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज का पॉजिटिव हाँ होता है ना। ये तो एंटी क्लॉकवाइज करेक्ट। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है ना, तो ऐसे क्यों हाँ होगा। बट ओवरऑल तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है ना। और अगर तुम देखोगे ए टू बी, तो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ अगर के ए टू बी में अगर हम जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर ग्रेजुअली। वॉल्यूम सेम ही जगह में है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा। नहीं, उन्होंने बोला वर्क डन नेगेटिव, नेगेटिव होगा इसमें, मतलब नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव गाइस। एवरीबॉडी, लेट मी शो यू व्हाट he sent me. From A to B you are moving, A to B, okay, and this is how it is given. This is pressure, this one is volume, and the question is asked what will be the net work done in this case. Okay, how to solve it? We discussed during our discussion, if you have cyclic process clockwise, then work done will be positive. Otherwise, work done will be negative. So according to this situation, it should be negative because it is anti-clockwise. But the point is, um, अर्पित, जब A से B हम मूव कर रहे हैं ना, when we are moving from A to B, वॉल्यूम सेम है ना। हाँ यस और नो? वॉल्यूम। और when वॉल्यूम इज सेम तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। बस खत्म, देन वर्क डन इज मैं जीरो। मैं मतलब मेक सेंस? नेगेटिव, नेगेटिव होगा इसका हाँ। आंसर। नेगेटिव नहीं बोला था नहीं उन्होंने। नहीं, देखो, रिमेम्बर वन थिंग कि अब टीचर जब इतना सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं ना, तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि लॉजिकली वो सूट करता है कि नहीं। टीचर कैन मेक मिस्टेक इवन व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास, आई एम सेइंग thousands of words, I might make mistake, but is this logically correct कि volume is same so volume is zero? Yes or no? Why not in case of cyclic process it is zero? Because there is some volume, correct? There is some pressure. That's why in clockwise, anti-clockwise, there are some value, but here it is zero. Example. This is, let me give you more interesting part of the same segment. कि अगर अर्पित में ऐसा दूं तुम्हें ग्राफ, ये प्रेशर का है, ये वॉल्यूम का है, ये है ए और ये है बी, ठीक है, और कोई मुझसे यहाँ पे पूछे कि क्या ये वर्क डन जीरो होगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे तो प्रेशर सेम है ना, वॉल्यूम तो अभी भी चेंज हो रहा है। और अगर मैं बी से ए जा रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। चंदना, here when we are moving from B to A in lower graph, so volume is reducing, work done will be negative. But in above graph, because there is no change in volume, so work done is zero. Any doubt? Sir, in second graph, pressure is same, not sir, constant. Yeah, pressure is same, but we know work done is equal to pressure delta V. Pressure is same still, work done will be there, correct? Yes, sir. Yeah, but volume change is not zero. बताओ अर्पित, कोई डाउट हो इसमें? लॉजिकली ये सूट कर रहा है? नहीं, पहले वाले का हम्म, मैं बोल रहा हूँ, अगर एक पॉइंट हम ले लेंगे बीच में सी पॉइंट, हाँ कोई भी सी हम्म, पॉइंट ले लेंगे हाँ, पहले वाले ग्राफ,
हाँ, लेना प्लीज। ये ले लेता हूँ इसी पॉइंट। देन ए टू सी वॉल्यूम, मतलब ए टू सी इंक्रीज वॉल्यूम। होगा, हाँ, ए टू सी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा नीचे वाला, मतलब इसका एरिया, मतलब हाँ, नीचे से नीचे ना। लेकिन हाँ लेकिन सी टू बी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। हाँ, तो पूरा वर्क डन नेगेटिव होगा ना, तो नीचे का पॉजिटिव और पूरा का नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन नेगेटिव होगा। नहीं, टोटल वर्क डन नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता ना, ए टू बी ओवरऑल तो वॉल्यूम में चेंज ही जीरो हो रहा है। नहीं, मेरा भी तो जो अगर लॉजिक है उससे उसके हिसाब से तो नेगेटिव भी हो रहा है। ये भी तो ठीक हो नहीं, सकता है ना। नेगेटिव नहीं हो सकता, पता है क्यों? ए टू सी पॉजिटिव होगा, सी टू बी नेगेटिव होगा। अब वो तो सी को कहीं पे भी मान लोगे ना, वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ना नंबर्स में दी है वहीं वैल्यू। वहीं पे भी मान लीजिए ना, तो उसके हिसाब से भी तो होगा, हाँ, मतलब। पर हमें नंबर में वैल्यू भी तो नहीं दी है ना। तो इसमें जीरो होगा वर्क डन। हाँ, इसमें तो 100% जीरो होगा, ठीक है। है ना। इस केस में जीरो होगा, लेकिन तुम्हारा पॉइंट सही है, उस केस में वैल्यूज दी होनी चाहिए, तब हाँ हमें पता चल जाएगा, है ना। अगर मान लो, क्या बोलते हैं, सी एकदम मिडिल में है, ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, ए से सी पॉजिटिव, सी से बी नेगेटिव, नेट फिर भी जीरो, क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम है, मिडिल में है। यस और नो? जी जी। उस लॉजिक में भी सूट करता हाँ, तो जीरो होगा। है। Sadhana, you हाँ, understood Yes, what I'm sir. trying to convey? हाँ जी। बताओ अर्पित, कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, अभी समझा, कंफ्यूज हो गया तो था गाइस, मैं। नहीं सही है, अच्छे डाउट है, तभी तो वही बात है ना, मजा आता है इससे ऐसे कंफ्यूजन में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो टुमारो, क्या बोलते हैं, as I mentioned, I'll take two class, one in the night at 9 o'clock. Tomorrow I'm not going to change at any cost. I'm giving pakka promise, pinky What promise. time? Night class is fixed 9 o'clock, No, and I'll take one morning class में. in afternoon. Okay. फिर कल मेरा Uh, एलन नहीं है, so you can take in the morning time then. नहीं सर, या मॉर्निंग में मेरा लेक्चर है ना। अच्छा, मॉर्निंग में लेक्चर है तुम्हारा फिर? हाँ, मेरा 3 बजे तक खत्म होता है। ठीक है, तो वो हाँ, उस हिसाब से हम प्लान करके ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, तो तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सॉल्व Thank you, 30 sir. क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड sometime, एग्जांपल, अनविता, यू मेंशन कि सर मेरा अभी